Hello guys, good morning. So it's Tuesday morning and I'm leaving for Ahura. अर्ली मॉर्निंग इतनी ज़्यादा ठंडी नहीं है, मतलब एटलीस्ट मैंने जैकेट्स वगैरह पहने तो मुझे तो कुछ भी नहीं लग रही है. इट्स फीलिंग nice. It's not cold, it's not warm, and it's not sweaty right now. आगे का पता नहीं, लेकिन अभी तक तो नहीं है. Moto vlogging, want to do it. It's pretty difficult, I should say. Really difficult to get the sound right, to get the angles right, and you have to do all this when you are tired, when you're running late, and you want to reach at certain point, and you are feeling frustrated. I don't know how the people who are doing right now all these things are doing it, but hats off to all of you, sir, and all the respected moto vloggers in India and rest of the country. Like जो भी आप लोग करते हो बहुत ही सराहनीय है. To be tired and still upload and be entertaining. From the time I have started recording my videos, editing video is really a headache. Whatever you guys are talking about, it should be entertaining, it should be engaging, it should be useful to the people who are watching the videos. One more thing, like you have to invest a lot of money, and you have to have lot of money to invest, like in good cameras and good gears, in good bike. Like people obviously would want to watch a good bike. Before I started this video, I checked the camera angle, I double checked my voice. So these are the things which I think you guys should also know if you're going to start your moto vlogging channel someday. Today is Dussehra, by the way, so happy Dussehra to people who are watching, and may good always prevail over the evil. I hope you guys can see the fog over the mountain and in the distance, if you guys can see. Sherwin, right? Sherwin, yes. Yeah, Tabriz. You may not notice. Yeah. Hey. Yeah. Now direct Charuti. Direct Charuti रुकोगे? I don't want to stop. Somewhere near the toll. चाय पी के चलते हैं. No problem. So Sherwin and Glenn are here, and he is saddling, which I can't at normal speed. This is a pakka I couldn't have done, like maneuver. Okay, that's the sand. If you can see now, वो देखो. Oh, mashallah. That sunrise and the fog below it, it's breathtaking. यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा ठंडी है क्योंकि I can feel it in my gloves now that it's cold. So I'm pretty sure I cannot use these gloves in winter season. So these gloves are limited just for, you guessed it right, no seasons. Summer में इतनी गर्मी होती है. It just, I think, might be around 24, 25, and my hands are freezing right now. I don't know why.
सबसे ज़्यादा ठंड मुझे मेरे हाथ में ही लग रही है. नॉट इवन माई जैकेट और माई पैंट. ऑब्वियसली मेरे शूज़ में तो नहीं लगेगी. Hayabusa. Okay guys, so we are starting again. It's just a short break after the Virar toll for a tea. Now going, the next stop would be Charoti toll, which is about I think 50-ish kilometer. thumbs up मिल गया फर्स्ट जिंदगी में. So guys, as you can see, I'm enjoying my ride to the fullest. I think slow चलाने में भी मज़ा है. And MashaAllah, all this Wadia guys, all this Wadia, and there are super bikes coming in Ahura even on Tuesday. I think maybe it's Dussehra, that is the reason few of them are on their way to Ahura. Not even a single super bike has overtaken me yet. Oh my god, what is happening? I should be talking to you guys a little bit. It was fun riding around a Touch 120, and as you might have already seen, the Hayabusa guy was giving me flybys. I think he gave me twice, and then I pieced him out. Hopefully I'll meet him in Ahura as well. गाइस अबाउट टू रीच आहुरा. बहुत ही सही मज़ा आया 4 रूट से यहाँ पे आने तक. इट वाज वेरी ऑसम एक्सपीरियंस टू कम टू आहुरा अगेन, एंड दिस इज आई थिंक माय सेकंड टाइम कमिंग टू आहुरा. नहीं, सब लोग अलग अलग ग्रुप में रहेंगे. वो लोग अलग ग्रुप में रहेंगे. वो स्पोर्ट्स बाइक है यहीं तक. अभी यहाँ से वापस बॉम्बे से आए रहेंगे सब लोग. हाँ, संडे के दिन बहुत ज़्यादा रहती है. आज तो वीकडे है ना. संडे का दिन रहता तो बहुत ही ज़्यादा रहते. हाँ, बस ऐसे ही ट्रिप मारने के लिए बाइक्स ज़्यादातर लोग.
ये दोनों सुपर बाइक है, ये दोनों सुपर बाइक्स है। वो 650 सीसी है, ये भी 650 सीसी है। तो ये लोग ज़्यादा स्पीड में जाएंगे। वो 390 है, वो भी कंपैरेटिवली 160 तक 170 तक जाती है वो भी। ये सब 200 तक जाती रहेगी ये वो। हाँ नहीं, अभी आगे से यूटर्न लेके चले जाएंगे। हाँ एक और एक आ गया, वो मेरा ग्रुप है अभी जो आ रहे हैं वो साथ में, और वो जो खड़ा हो गया आ रहा है। आगे जाके बैठ गया भाई। जा रहे ना तेरे नाम पे सलमान खान के पास भी ऐसी बाइक है। गाइस हम लोग अहूरा को टाटा बोल के निकल रहे हैं यहाँ से। इट वॉज एन अमेजिंग राइड। सामने चश्मा था, मुझे ऐसा लगा तो धूप ज़्यादा है। तो गाइस बहुत ही ज़्यादा एंजॉय किया। एंड सुबह में ऑलमोस्ट 6 बजे से थोड़ा पहले निकला घर से, एंड इट्स ऑलमोस्ट 12 o'clock। तो 6 आवर्स की जर्नी आप लोग के सामने। 6 आवर्स में से 2 नए लोगों से मिला और खाना खाया, एंजॉय किया, डिफरेंट एंगल्स ट्राई किया। एंड लेट मी नो ऑन विच टॉपिक आई शुड बी मेकिंग द वीडियोज़। सो आई एम नॉट अ सक्सेसफुल यूट्यूबर, बट होपफुली जब मेरे एटलीस्ट 1000 फॉलोवर हो जाए तो आई थिंक एट दैट टाइम आई कैन मेक अ वीडियो ऑन माई जर्नी 2000 subscribers. So the first 100 would be very difficult. Right now I'm at 31 or 35 I guess. It's in 30s, not in hundreds. So कुछ इस तरीके से है ज़िंदगी की कहानी अभी तक। And since it's Dussehra, I didn't went to work today and I'm enjoying my day off. 6 hours on bike, few photos, new friends, few super bikes, lot of flybys, Z1000, Hayabusa, Ahura। ये मेरे आगे चल रही है Ahura, और हम लोग गए थे Ahura। And in breakfast I had akuri. It's a Parsi dish. So that's it from my side, guys. I hope you enjoyed the video. So please like the video and subscribe to my channel. That will support me and encourage me to make more videos. I'm only at 35, so you can do better. I know. Motor vlogging community. चलो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करो और 1000 तक तो लेके जाओ यार सब्सक्राइबर्स। Till then, see you guys. Bye bye. Have fun. Enjoy. Assalamu alaikum. Take care. Happy Dussehra once again. And bye bye.